Good evening, everyone. So I think it's the second lecture for the topic uh, alternating current. And today's class is very, very important. Today we go through especially three factors. One is for the pure resistor. Second one is for the pure inductor. Third one is for the pure capacitor. If you understand that three part, that means you can say almost you understand the everything of AC. And if you not understand that part, so it's very difficult to understand AC. So this part is the most important part to understand AC. Are you ready for that, everyone? Okay, so we start with the first one is pure resistance. So we use a pure resistance with the input AC signal. So see, first of all, we represent the DC signal by the symbol this plus and minus, and we represent the AC signal by the symbol this one. This is the symbolic representation of AC. Suppose this one is plus, this one is minus. Okay, so if you have this type of plus minus, that means this is the AC signal. Acha, let the induced input EMF is EM sine omega t. We know it very well. It can be sine or cos, and by using generator, we can create it E equals to EM sine omega t, and the value of EM in presence of magnetic field, if we rotate loop, means the coil, then the the value of the induced EMF is NAB omega and sine omega t. We already find it, and this E is this one, and this is EM. So this EM is EM sine omega t. We know this is the peak value, and for EMF and current, we use the RMS value. And in the previous class, I already discussed about that, why we use the RMS value. Now here, if I is the current, so current is like this. Now it is a complete loop, so we can use the Kirchhoff's law. According to Kirchhoff's law, what happened? And this is called the analytical derivation to find out the current on the basis of input EMF. So current into resistance minus EMF equals to 0. We complete the loop. So now current is equals to EMF by resistance, that is EMF maximum sine omega t by resistance, that is EM by R, that is IM sine omega t. Is it okay for everyone? Yes, sir. So now on that basis, if this one is our EMF, E equals to EM sine omega t, what we find current is also I equals to IM sine omega t. Means the when the this is the peak value of EMF, this one is the time zone. So current when the EMF is 0, see the current is 0, same equation. So they are like this. Now I equals to IM sine omega t. Now you can ask me, sir, why you use the amplitude of current is less than the amplitude of EMF? It's because here that means here we can suppose the resistance is greater than 1. That means suppose your EMF is 10 volt and your resistance is 2 ohm, then the maximum current is EMF by resistance, that is 10 by 2, that is 5 ampere. If in any question, if you find the current is more than the EMF in terms of amplitude, that means your resistance is less than 1. And here we suppose the resistance is greater than 1. So we use the amplitude of the current less than EMF. Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? Hello? Yes, sir.
Okay. Next is that from this we can write a statement that when the EMF is 0, current is 0. When the EMF is maximum, current is maximum. When the EMF is 0, current is 0. When the EMF is negative, current is negative. When the EMF is 0, current is 0. That means we can say EMF and current in case of pure resistance, EMF and current are in same phase. I repeat, in case of a pure resistance, EMF and current are in same phase. Is it clear? Is it clear? So what we can write? We can write for the phasor diagram, very, very important. Phasor diagram. What do you mean by phasor diagram? Phasor diagram means at any instant for at any angle. How we get the angle? It's very simple. Theta is omega t. Omega is fixed because it's alternating current. You have a fixed value of omega. And how the omega is related? Omega is 2 pi frequency. So if you know the frequency, you can find out the angular frequency. If you know the angular frequency, then you find out the angle. If you know the value of time, means when the time is 0, your angle is 0. For some time, the angle may be 30 degree, angle may be 40 degree, angle may be 50 degree, 60 degree, 90 degree. So it can be in first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, any quadrant, any time we can use. So we just write it. It not indicate the first quadrant. It just say you angle at any instant. Is it okay? Okay. It can be first quadrant. It can be second quadrant. It can be third quadrant. It can be fourth quadrant. Depend on the value of omega and t. Is it clear, everyone? Yes, sir. So at any instant, if you have the E equals to Em sine omega t, if you have E equals to Em sine omega t, at the same time, your current is also in the same form, I, that is Im sine omega t. Or you can say, in case of pure resistance, or if you want to find out the voltage due to pure resistance, you get the same value. That means with respect to that input EMF, your current due to pure resistance or voltage due to pure resistance, it is Im sine omega t and Vm sine omega t. They are same value, same thing. Is it clear? Is it okay? So you can draw this one as a phasor diagram of input EMF and current, or you can write input EMF and current due to pure resistance, or even you can write here VR, that means voltage due to pure resistance. They are in same phase in case of pure resistance. Is it okay for everyone? The first part, if you understand this, that means 33% complete. Is it clear? Yes, sir. Now the second part is ভালো করে শোন, হ্যাঁ, the second part is, suppose in case of pure capacitor, so you have a C plus minus. Again we can use the Kirchhoff's law, net voltage remain 0. So if we use this one, we know Q is CV, V equals to Q by C. For this one we can use Q by C minus EMF equals to 0. Can we write it? Charge by capacitance is the voltage, plus nilam আর তারপরে এটা minus nilam. Is it okay? Yes, sir. So Q by C E, that is Em sine omega t. Is it okay? Okay. So Q is equals to CEM sine omega t. Can we write it?
Yes, sir. And now my concentration is to find out current from this charge equation. How can we find out current from this charge equation? Anyone tell me? Anyone? From this charge, how we get the value of current? Rohit? So C equals to Q by Em sine omega t. No, I equals to rate of flow of charge is called the current. So that means we have to differentiate Q with respect to I time. equals Is to it clear? dq by dt. Is it okay? Yes, Is it sir. okay? Yes. So CE maximum differentiation of sine omega t by dt. Anyone tell me what is the differentiation of sine omega t? Hmm? Omega cos omega t. Very good. Cos omega t into omega. That means C omega EMF cos omega t. Now, can we write it EMF 1 by C omega just to arrange it cos omega t? Can we write it? Yes, sir. Yes. Now, if left hand side is my current, this cos and sine, they are unitless quantity. According to principle of homogeneity, if this is the current, then that must be equal to current. Yeah. So we can write this Im cos omega t. Can we write? Sir, Rajdeep Paul. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. Can we write I equals to Im cos omega t? Yes, sir. So if we can write I equals to Im cos omega t, if we can write I equals to Im cos omega t, Im, that is Em by 1 by C omega. Now anyone tell me, if this is the current, this is the voltage, what do you expect this one? Resistance. Resistance. Very good, very good. But is that resistance is the pure resistance? Pure. No. Because no resistance is there. So this resistance is resistance due to capacitor. Yes, sir. This resistance is due to capacitor, which is represented by XC. So এই resistance এর একটা নতুন নাম আছে, इसका एक नया नाम है, इसको कहा जाता है reactance. Reactance of capacitor. So what do you mean by reactance of capacitor? Reactance of capacitor मतलब resistance of capacitor. ठीक है? But that resistance is not pure resistance. तो इसका अलग से नाम दे दिया गया है reactance of capacitance और capacitor. Reactance of capacitor और इसको बोला जाता है capacitive reactance. Reactance of capacitor और capacitive reactance is 1 by C omega. Is it clear? Is Yes, it clear? sir. Acha, what is the SI unit of reactance of the capacitor? Ohm. Okay. तो देखो एग्जामिनर बहुत चालू हुए. एग्जामिनर तुम्हें बोलेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा सी. डोंट कंफ्यूज, सीधा राइट लिखना ओम इनवर्स. इज इट क्लियर? Okay. Yes, sir. Okay, so now if we want to draw graph between XC मतलब reactance of capacitor or capacitive reactance and omega, or you can write frequency. Why? Because you can write it also 2 pi frequency into C. Why?
because omega equals to 2 pi frequency. Is it okay? Yes, sir. So now xc omega or xc frequency, they are directly proportional or inversely proportional? Directly proportional or inversely proportional? Sir, inversely. Inversely proportional. So this is xc, this is omega or frequency, and here you can write c equals to constant. Is it clear? So this graph is very, very important. So anyone if ask you what is the draw the graph reactance of capacitor or capacitive reactance versus frequency or angular frequency, you have to draw this graph. Is it clear? Yes, sir. Now some important factor. First of all, for DC, omega equals to 0. If omega equals to 0, that means resistance due to capacitor or reactance due to capacitor or capacitive reactance, that is 1 by omega c is infinity. Is it okay? Yes, sir. So for DC, no current allowed through the capacitor. Is it clear? कैपेसिटर के अंदर से कोई करंट नहीं जाता है इन केस ऑफ डीसी. ओके, एक्सेप्ट द चार्जिंग टाइम, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग. इज इट ओके? यस सर. अच्छा, अब देखो, ये है मेरा करंट और ये है मेरा ईएमएफ. ये है मेरा ईएमएफ, ये है मेरा करंट. सो दैट मीन्स if you want to draw the graph, this one is input EMF, E equals to EM sin omega t. This one. Now with respect to that, my current due to capacitor is like this. Is it okay? Is it okay? I equals to Im cos omega t. So this one is Yes, I sir. equals to Im cos omega t. Acha, when the EMF is 0, current is maximum. When the current is maximum, EMF becomes 0. When the current is minus, EMF is 0. When the EMF is negative, when the EMF is decreasing, again the current is increasing. So when the EMF is 0, current is maximum. आगे कौन शुरू हुआ? करंट शुरू हुआ. देखो, ये पहले से शुरू हो चुका था, है ना? Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू वेव, करंट विथ रिस्पेक्ट टू ईएमएफ कितना आगे है, कितना एंगल का आगे है? पाई बाय 2. वेरी गुड, पाई बाय 2. सो Im sin omega t plus 90, that is cos omega t. Second quadrant side is positive or negative? Positive. तो देखो, इसके रेस्पेक्ट में हम बोल सकता है ये 90 डिग्री लीड है ना? और इसके रेस्पेक्ट में ये कितना है? 90 डिग्री लैग.
Yes, sir. So what we can say, in case of pure capacitor, capacitive current lead by 90 degree, and actually capacitive voltage lag by 90 degree. Okay. Yes, sir. So if we want to draw the phasor diagram, you can write this also. In case of pure capacitor, capacitive current lead by 90 degree and capacitive voltage lag by 90 degree. So if we want to draw phasor diagram, if this one is your E equals to Em sine omega t, this angle is theta, that is omega t. Capacitive current, the amplitude is little bit less because we consider X is greater than 1, that is the capacitive current, that is Im sine omega t plus 90 degree. Capacitive current lead by 90 degree. Similarly, if we want to check the capacitive voltage, E equals to Em sine omega t theta omega t. So capacitive voltage Vc lag by 90 degree. So if we want to write Vc, we write, if we want to write Vc, we write Vm sine omega t minus 90 degree. Is it clear? So just remember in that way, capacitive current lead and capacitive voltage lag with respect to the input EMF. Is it clear? Yes, sir. Everyone, you understand? Second part. Yes, sir. দেখ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু ভালো করে বোঝ কিন্তু, ঠিক আছে? Next, if you understand all these things, this phasor diagram, especially this phasor diagram is very very important. কখনো সখনো এটা জিজ্ঞেস করে, মেইনলি এটাই জিজ্ঞেস করে. So this phasor diagram is also very very important. After that, তারা একটু লিখে নেই পুরো জিনিসটা। পুরো জিনিসটা লিখবি, আমি তো তোদেরকে নোট পাঠাবো। আচ্ছা লিখে নিলে তাড়াতাড়ি হবে, তোদের বাড়িতে একটু পড়াশোনা হবে, কমসে কম পড়াশোনা তো করিসই না। Okay, so now we can try for the inductor, pure inductor represented by L. So we know that induced EMF for inductor L di by dt from electromagnetic induction. So this one minus EMF equals to 0. This one is also voltage, this one is also voltage. These two voltage are negative to each other. So that's why obviously always in a net loop, net voltage is 0 according to Kirchhoff's law, right? Okay. So L di by dt, that is induced EMF, that is Em sine omega t. So di, that is induced EMF by length sine omega t dt. अब मुझे बोलो यहाँ से करंट कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? Q equals to I. But di is there and dt is there. How you get the current? বল। তাড়াতাড়ি বল। আরে taking integration both side. আয় ভগবান, ওরা তো দিন দিন সব ভুলে যাচ্ছিস দেখি।
Anyone tell me how you integrate this? What is the value of this integration? बोलो. minus cos omega t by omega. Minus cos omega t by omega. Very good. So minus em by l omega cos omega t. अब देखो ये भी करंट है, तो माइनस ये भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट cos omega t we can write first of all. Second thing, if I write Im, that means em by l omega. So what do you mean by that l omega? Same, right? Same like current voltage by resistance, but that resistance is not due to pure resistance. That resistance is due to inductor. So we can say em by xl. So that is called reactance. Reactance of inductor, or it's called inductive reactance. XL, which is omega L. Is it clear? SI unit same, SI unit ohm. Is it okay? Yes. Okay. So if it is okay, a derivation is going to important, huh? If it is okay, then at DC, when omega equals to 0, at DC, when omega equals to 0, XL is 0. So if the XL is 0, current is how much? EMF by XL 0, which is infinity. তাই না? আগেরটা কি ছিল? Resistance infinity ছিল আর inductance 0 ছিল. Is it okay? Okay. Yes, sir. So on that basis, if you want to write XL versus omega or frequency, because you can write it 2 pi frequency into L also. They are directly proportional where L is constant. Is it okay? Okay. Hello. Yes, sir. Okay. So now, so देखो, this is my I equals to Im cos omega t. If you want to draw it analytically, means on the basis of wave equation, this one is my Em, this one is my t or omega t theta. There is E equals to Em sin omega t, and now it is minus, so you can start from here. Is it okay? I equals to minus Im cos omega t. Can we write? Minus Im. Is it okay? Is it okay? Is it okay? Yes. Hello. ঠিক আছে তো? Am I audible? Hello.
আমার কথা শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. So I am cos omega t. हाँ sir. So that means what you can say, in case of pure inductor, inductive current lag with respect to EMF. How much angle lag? How much angle lag? So 90. 90. So minus 90. ऐसे भी देखो, सेकेंड क्वाड्र फर्स्ट क्वाड्रेंट से अगर हम माइनस 90 डिग्री करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट से माइनस 90 करने से कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट से माइनस 90 करने से कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? माय गुडनेस, इतना टाइम लगता है? कौन सा क्वाड्रेंट? हाँ, कौन सा क्वाड्रेंट? अरे कोई तो बोलो, मुंह तो खोलो। हेलो। फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. समझ में आ गया? समझ में आया? है सर। Okay. Now we can say that means in case of pure inductor, inductive current lag by 90 degree with respect to EMF, and for voltage ठीक उल्टा होता है, inductive voltage lead by 90 degree with respect to input EMF. So phasor diagram at any instant, अगर ये मेरा E equals to EM sin ओमेगा टी है at any instant, कोई भी instant, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, यहीं पे भी हो, इंडक्टिव करंट उससे 90 डिग्री पीछे होगा, मतलब दिस वन इज योर IL, 90 डिग्री लैग। तो क्या हो गया? IM sin ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। और अगर हम इंडक्टिव वोल्टेज का बात करें, ठीक, इसका उल्टा हो जाता है। तो वोल्टेज में क्या हो गया? वोल्टेज में क्या हो जाएगा? अगर E इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी है, सो ये मेरा VL कितना 90 डिग्री का लीड करेगा। तो इसको हम लिखेंगे VM साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। क्लियर? फेजर डायग्राम समझ में आया? Yes, sir. तो देखो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको अगर समझ में आया है तो एसी तुम्हारा एकदम कुछ नहीं लगेगा, और अगर इसको समझ में नहीं आया है एसी बहुत टफ लगेगा। और इसी के ऊपर पूरा एसी है, हम तुम लोगों को बिना कुछ पढ़े दिखा देंगे, जैसे LC, LRC, RC कुछ नहीं पढ़ के हम सीधा दिखा देंगे। इफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, हाउ यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, बिफोर दैट एक क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, उसके पहले मैंने एक बार भाइवा में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, तो एक बच्चा ने काफी सुंदर आंसर दिया था। दैट टाइम आई एम इन GD गोयनका। तो भाइवा में पूछा था, फिर मैंने उसको क्या किया, जो पूछा, जो बोला था मैंने, फिर नेक्स्ट बैच में बच्चा लोगों को वो बात बोला। मतलब एक कॉमेडी टाइप का था सिचुएशन, बच्चा लोगों ने वो कॉमेडी टाइप को याद कर लिया, और अगला साल तुम्हारा वही पेपर बोर्ड में आ गया, वही क्वेश्चन बच्चा लोगों ने वो कॉमेडी वाला ही लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा था कि वाई DC current does not able to passes through capacitor but AC can. The question is why DC current does not able to passes through capacitor but AC can. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने भाइवा में पूछा था। तो एक बच्चा ने बोला, look sir, capacitor is look like this and DC current is look like this and AC current is look like this, so it cannot passes through capacitor but DC can. You understand? किसी को कुछ समझ में आया? हेलो,
হ্যালো, ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয় বলে? আরে এটা জোক আর কি, যে এটা মাঝখানে কাটা তো স্ট্রেট যেতে পারে না, আর এটা যেহেতু এরকম ভাবে যাচ্ছে তো এর মধ্যে দিয়ে এরকম ভাবে চলে যায়। না, এটাই লজিক, ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয় বলে। সেটা তো পরের কথা। তো এটা হচ্ছে जोक। उसके बाद 2015 या 16 का बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला याद है मैंने वो जोक बोला था, एक बच्चा बोलता है ला सर मैंने तो वही लिख दिया, मतलब यही वाला लिख दिया है। जो भी हो तो ये मत लिखना, ठीक है। इसका आंसर इज फॉर डीसी ओमेगा इक्वल्स टू 0। सो फॉर एक्सी 1 by omega c it is infinity, so not possible for DC, but for AC omega is fixed, okay। So XC is 1 by omega is fixed, not infinity, so I is EM by XC, a fixed value, not 0। okay, try to understand কি হলো ব্যাপারটা। আর একটা ফিক্সড ভ্যালু হলে তো যাবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। अब हम तुम लोगों को दिखाएंगे कि बुक में तो देखो सीधा लिख दिया है, लेकिन ये सब आया कहां से। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्टेंस तो देखो हम लोगों ने देखा रिएक्टेंस दो तरह का होता है, एक होता है ड्यू टू कैपेसिटर, एक होता है ड्यू टू इंडक्टर। एंड रिएक्टेंस इज आल्सो वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, which oppose the flow of the current. So reactant is two type, one is the inductive, one is the capacitive। और AC सर्किट में क्या है, AC सर्किट में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि AC सर्किट में कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस बोथ प्रेजेंट, ऐसा हो सकता है। सो इफ दैट इज पॉसिबल, और ऐसा होता ही है, so suppose you have an inductor and you have a capacitor L and C, and you connect it with a EMF, that is EM sin omega t। Suppose your this one is 20 sin omega t, XL आया 5 ohm, XC आया 2 ohm। तो सर्किट में करंट कितना है? ये पहला क्वेश्चन है। एनीवन टेल मी व्हाट इज द आंसर? एनीवन टेल मी व्हाट इज द आंसर फास्ट? अरे कुछ तो बोलो जल्दी जल्दी, रिकॉर्डिंग चल रहा है, सबको पता चलेगा मेरा 12th का बच्चा लोग कितना भोंदू है। फास्ट फास्ट बोलो आंसर क्या है? हेलो, ओके, चेंज द क्वेश्चन। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। E इक्वल्स टू EM sin ओमेगा t दिया है, और आसान कर देता है। ये दिया है 20 वोल्ट, ये दिया है 10 वोल्ट। व्हाट इज द नेट वोल्टेज? व्हाट इज द नेट वोल्टेज? इसको भूल जाओ। ये दिया 20, ये दिया 10, व्हाट इज द नेट वोल्टेज? कितना? हेलो हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन रहे हो? हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या बदमाशी है यार। ऋतव्रत, है सर। व्हाट इज द आंसर? सर किस 30। ओ अच्छा। Yes, Khushi, tell me the answer.
ये 20 है, ये 10 है, कितना आएगा बोलो ना बाबा। 200 साला वोल्टेज 20 আর 10 200 কোথা থেকে চলে আসছে? 30। देखो मैं दोनों क्वेश्चन ही बता रहा हूं। मैंने इसमें दिया था कितना, 5 ना, इसमें कितना दिया था, 2 ना, पहला क्वेश्चन है ना। हेलो, यस सर। अच्छा पहले देखो, सबसे पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ करो। फेजर डायग्राम के हिसाब से ये आएगा मेरा E इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी था। मैंने क्या बोला था, कैपेसिटिव करंट लीड, कैपेसिटिव वोल्टेज लैग। तो ये हो गया मेरा VC, और इंडक्टिव करंट लैग एंड इंडक्टिव वोल्टेज लीड। तो ये मेरा हो गया VL हुआ ना, हुआ। यस सर। So this one is voltage due to inductor, this one is voltage due to capacitor, दोनों का मिला के voltage due to reactance. So total voltage कितना हो गया, X, that is VL minus VC। क्या मैं लिख सकता हूँ, because they are opposite to each other, तो lead minus lag, उल्टा है ना। है। So net voltage is how much, एक वाट में अगर बोले 20 minus 10, that means 10 volt। Is it clear? Second question जो था, clear? यस सर। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा देर बाद आ रहा हूं। देखो इसमें से सेम करंट फ्लो करेगा बिकॉज इट्स अ सीरीज कनेक्शन। सो वी कैन राइट I into X, that is the total reactance, I into XL minus I into XC, can we write? Yes So sir। X is what, XL minus XC। इसका मतलब मेन प्रॉब्लम रेजिस्टेंस में है, बाकी किसी में नहीं। रेजिस्टेंस मतलब inductive resistance and capacitive resistance, so they are opposite to each other। Inductive resistance always opposing the capacitive resistance, so net resistance is the difference of these two। Is it clear? Because they are always opposing each other। ठीक है, यस सर। तो तुम्हारा यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना था, 5, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, X 5 माइनस 2 माने 3 हुआ। यस सर। वोल्टेज कितना है, EM, तो I मैक्सिमम क्या हो गया, EM by X, तो 20/3 एम्पियर। इज इट क्लियर? दैट इज द पीक वैल्यू, नॉट द RMS वैल्यू। क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया, मैंने क्या बोला था? ठीक है, अगर तुम दोनों का इंडिविजुअल वोल्टेज निकालना चाहो, एज यू नो द करंट IM/3, so VL, that is IM into XL, that is 20/3 into 5, that is XO/3, and VC, that is 20/3 into 3 into 2, that is 40/3। अब दोनों का डिफरेंस करो, VL minus VC, that is 100/3 minus 40/3, 60/3, that is 20। देखो मिल गया ना, समझा? So if you understand the theory, numerical is very easy for you। मुझे न्यूमेरिकल बाद में देखना है, पहले थ्योरी तो कंप्लीट करो। So basically क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, reactance is the net resistance। I repeat, reactance is the net resistance offered by inductor and capacitor in a AC circuit। Is it clear? Reactance is the net resistance offered by inductor and capacitor in a AC circuit। Is it clear? আরে বাবা, ইন্ডাক্টর হচ্ছে, রিঅ্যাকট্যান্স হচ্ছে একটা এসি সার্কিটের টোটাল ইন্ডাক্টর আর টোটাল ক্যাপাসিটরের যে টোটাল যে রেজিস্ট্যান্স, সেই টোটাল রেজিস্ট্যান্সটাকে বলা হচ্ছে রিঅ্যাকট্যান্স। সো রিঅ্যাকট্যান্স ইজ দ্য টোটাল রেজিস্ট্যান্স offered by inductor and capacitor। ठीक है? यस सर। And inductor and inductive resistance and capacitive resistance,
they always opposing each other. তার মানে যদি আমার xl বড় হয় তাহলে এটা পজিটিভ, যদি xc বড় হয় তাহলে এটা নেগেটিভ। মানে বা আমি এটাকে এইভাবেও বলতে পারি, if xl is greater than xc then the inductive is more effective, if xc is greater than xl then capacitive is more effective. Is it clear? We can say in that manner also. Clear? Yes, sir. Next is very, very important, impedance. Next is very, very important, impedance. Impedance represented by Z. What do you mean by that? It is the total resistance. It is the total resistance offered by AC circuit. What is the difference? Reactance is the total resistance offered by only inductor and capacitor, but the reactance is the total resistance offered by AC circuit. So in that AC circuit, you may have resistance, you may have inductor, you may have capacitor. Means the overall. Is it on this? Is it okay? ঠিক আছে? Yes, sir. তো আমার কাছে যদি একটা ইন্ডাক্টর আছে, একটা ক্যাপাসিটর আছে, একটা রেজিস্টর আছে, LCR. Now we know this one is VL, this one is VC, and we also know the VX, that is the combination of these two, which is VL minus VC. We know this. And this one is VR. Is it okay? The resultant is input signal plus minus E equals to EM sine omega t. Is it clear? I is the current. Yes, sir. So from phasor diagram, this one is E equals to EM sine omega t, theta equals to omega t. Now we know in terms of voltage, VL is greater than VL minus VC. One is L, one is C. So you can write it. Either V of X this side when XL greater than XC. না যদি ইন্ডাকটিভ রেজিস্ট্যান্স বেশি হয়ে যায় তাহলে ভোল্টেজ অফ দ্য ইন্ডাক্টর বড়, তাহলে নেটটা উপরের দিকে যাবে, তাই না? কারেন্ট তো সেমই যাচ্ছে। আমি কি বললাম বুঝলি? আরে হ্যাঁ না কিছু তো বল। হ্যালো হ্যালো। Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। দেখ মনে কর এটা 5, এটা 2, এটা 3, তো 5 × 3 15, 3 × 2 কত 6, তাহলে 15 - 6 কত হয়ে গেল? এটা মনে কর 5, এটা মনে কর 3, এটা মনে কর 2, তাহলে 5 5 10, এটা 3 2 6, তাহলে কত হয়ে গেল? 4 ভোল্ট, তাই না? তাহলে দেখ 5 যদি 3 এর থেকে বড় হয় তাহলে VX কার জন্য হচ্ছে? VL এর জন্য হচ্ছে, মানে ইন্ডাকটিভ বেশি বড়। আর ঠিক যদি উল্টোটা হয়, এটা 5 এটা 3 হয়, তাহলে দেখ এটা হয়ে যাচ্ছে 6, এটা হয়ে যাচ্ছে 10, তাহলে এবার বড়টা কি হচ্ছে? ক্যাপাসিটিভ। DC. তার মানে ভোল্টেজ কার বেশি? ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ বেশি। তাহলে ইফ এটা যদি এদিকে যায়, VX যদি এদিকে থাকে, তার মানে আমি বলতে পারি XL লেস দ্যান XC, তাই তো? হ্যাঁ। দুটো তো একসঙ্গে হবে না, হয় একটা বড়, হয় এটা বড়, নয় এটা বড়, দুটো তো এট এ টাইম হতে পারে না। না। যে কোনো একটা হবে না? হ্যাঁ, যে কোনো একটা হবে। যে কোনো একটা হবে, তো হয় এটা হবে নয় এটা হবে। আর এই দুটোর সঙ্গে আমার যেটা VR অন দ্য ডাইরেকশন সেম ফেস, তাই না? তাহলে হয় এটা বা এটা, এটার সঙ্গে VR অলওয়েজ 90 ডিগ্রি, তাহলে রেজাল্টেন্ট যেটা VZ মানে টোটাল ভোল্টেজ,
টোটাল ইফেক্টিভ ভোল্টেজ ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর আর রেজিস্ট্যান্স মিলে এই দুটোর পারপেন্ডিকুলার হবে, কারণ ভেক্টর তো একটা, এটা Vx এটা Vr, দুটো রেজাল্টেন্ট, বা এটা এদিকেও হতে পারে Vz, তাই তো? তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে একটা জিনিস তো ফিক্স, এই Vr এর সঙ্গে Vx 90 ডিগ্রি হবে, এটা তো ফিক্স, হয় এদিকে নয় এদিকে, হবে তো 90 ডিগ্রি। হ্যাঁ তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারি Vz স্কোয়ার, that is Vr square plus Vx square. Now this x can be this one or this one. Square করলে তো অটোমেটিক পজিটিভই হয়ে যাচ্ছে না? হ্যাঁ তাহলে Vz কত দাঁড়াচ্ছে? রুট আন্ডার V of r square plus V of x square. হ্যাঁ এটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি z, তাহলে কারেন্ট ইনটু টোটাল রেজিস্ট্যান্স, কারেন্ট ইনটু রেজিস্ট্যান্স স্কোয়ার, কারেন্ট ইনটু রিঅ্যাক্ট্যান্স স্কোয়ার। তাহলে আমি যদি কারেন্টটাকে বার করে দিই, কত আসছে? রেজিস্ট্যান্স স্কোয়ার প্লাস রিঅ্যাক্ট্যান্স স্কোয়ার। আই কেটে দিতে পারি। So z is equals to root under r square plus x square, বুঝতে পারলি? যেটাকে আমি লিখতে পারি r square plus x মানে xl মাইনাস xc স্কোয়ার, ইয়া তো আমি এটাকে আরো ভালোভাবে r স্কোয়ার ওমেগা l মাইনাস 1 বাই ওমেগা c হোল স্কোয়ারও বলতে পারি, তাই তো? লিখতে হলে তাড়াতাড়ি লিখ। ওকে, সো নাও এবার দেখ, আমি তাহলে ছোট ছোট কয়েকটা জিনিস সরিয়ে আর একটা জাস্ট লাস্ট একটা জিনিস বলবো, তাহলে আমার কমপ্লিট। তোরা বুঝতে পেরেছিস তো এই ব্যাপারগুলো? তাহলে দেখ এখানে বেসিক্যালি it's not depend on voltage, because voltage তো কারেন্ট ইনটু রেজিস্ট্যান্স, কারেন্ট সেম, তার মানে বেসিক্যালি they depend on resistance of the inductor, resistance of the capacitor and resistance of the pure resistor. তো সেই জন্য এটাকে কি করা হয়, পিওর রেজিস্ট্যান্স মানে যেদিকে আমার পিওর কারেন্ট পিওর ভোল্টেজ ছিল, আর এর সঙ্গে x, it can be xl minus xc or xc minus xl, মানে যে কোনো একটা বড়, এই দুটো রেজাল্টেন্ট হবে z, তাই তো? তো দেখ z ইকুয়ালস টু r স্কোয়ার প্লাস x স্কোয়ার, তাই না? পাইথাগোরাস থিওরেম। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। and this angle is phi. So what do you mean by tan phi? Perpendicular by base মানে x by r, মানে xl minus xc by r. So phi is what? Phi is the tan inverse omega l minus omega c by r. এই phi-টাকেই বলে ফেজ ডিফারেন্স। ওই যে বলছিলাম না, হ্যাঁ কিছু দেখা যাচ্ছে না, মানে লাইটটা একদম ডাইরেক্ট স্ক্রিনের মধ্যে। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। ফেজ ডিফারেন্স या फेज एंगल, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ইয়েস। চলো ঠিক আছে, এতখানি তাহলে আজকের ক্লাস, অনেকখানি।